हेलो फ्रेंड्स मोर रंजीत ये है OSSC CGL जनरल नॉलेज सिलेबस रो इंडियन इकोनॉमी एंड बजेट बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड बेसिक टू अपर लेवल्स क्वेश्चंस रो पार्ट नंबर 2 दिस इज ओनली फॉर रिवीजन। तो चलतु मो सह रही प्रथम रु शेष जाए थरे क्विक रिवीजन करनियंतु। तो फर्स्ट पार्ट रे हमें 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर साथले एबे हमें सेकंड पार्ट रे 51 रु स्टार्ट करिवा। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट? टेकन ओवर बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तार करेक्ट आंसर कोन हबो? 1948। तो आरबीआई रो सबु शेयर तक सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गला 1948 रे। बट क्वेश्चन एमती आसे जे आरबीआई केबे नेशनलाइज हैला? तो मने रखिबे 1 जनवरी 1949 रे यार नेशनलाइज हैला। तापरे क्वेश्चन एमती भी आसे यार फाउंडेशन केबे हेतिला? देन 1 अप्रैल 1935 रे यार फाउंडेशन हेतिला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। The book Plan Economy for India was written by? Plan Economy for India was written by कहा द्वारा लिखा जाइतला? तो यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी, एम विश्वेश्वराय। एम विश्वेश्वराय। क्लियर? नेक्स्ट। व्हाट आर gilt-edged securities? What are gilt-edged securities? Securities issued by multinationals, securities issued by the government, securities issued by the private sectors, securities issued by the joint venture company। तो करेक्ट आंसर हबो यार ऑप्शन नंबर डी, securities issued by the joint venture companies। ए जगह रे gilt-edged security कोन कहि परियो? आमे जनरली हाई ग्रेड रो जो बॉन्ड सब थाए जेउटा कि गवर्नमेंट आउ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सब इशू करंती कोन पई? टू जनरेट रेवेन्यू। ताकू कहबा आमे gilt-edged securities। नेक्स्ट। बिफोर इंडिपेंडेंस पीपल्स प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय? बिफोर इंडिपेंडेंस पीपल्स प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय कहा द्वारा हितला? तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो? तो यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय। नेक्स्ट। Among the following which one is not a credit rating agency operating in India? या भितर कोटा गोटे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नुह? CRISIL, ICRA, डाउ जोन्स, CARE। तो यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी तीनटा कहले ताहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो एमान को फुल फॉर्म कोन? एटा इंपोर्टेंट हबो। CRISIL, सी रहला क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर? ICRA यार फुल फॉर्म कोन? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। CARE केयर यार फुल फॉर्म कोन? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। क्लियर? तो नो जहाँ भी मुझे जगह लिखुची सेटा मार्क करेंगे, जहाँ कहूँ ताको मार्क करते। नेक्स्ट। जवाहरलाल नेहरू वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कहा द्वारा से इन्फ्लुएंस होते? देखो तो ये गोटे रिविजन पर्पज वीडियो, तो एथरे बेसी किसी एक्सप्लेनेशन रखा नहीं, एग्जाम भी पाखे आसलानी, तो आम आपको क्विक रिविजन ही करवा। जो मैंने ऑलरेडी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर सारी वीडियो द्वारा निजर क्विक रिविजन करेंगे। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम? जवाहरलाल नेहरू वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कहा द्वारा? तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी, फाबियन सोशलिज्म। फाबियन सोशलिज्म। नेक्स्ट। बैंक रेट इज द रेट एट व्हिच? Bank rate is the rate at which a bank lends of the public? No. The Reserve Bank of India lends to the public? No. The Government of India lends to the other countries? Impossible. The Reserve Bank of India gives credit to commercial banks. The correct answer will be option number D. Next. Objective test of social welfare maximization was devised by कहा द्वारा करा जाइतला? ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन वाज डिवाइस्ड बाय। तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी, परेतो। किए? परेतो। नेक्स्ट। पार्टिसिपेटरी नोट्स PNS आर एसोसिएटेड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? कहा सहित एसोसिएटेड? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? नो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। एटा को काली ही वीडियो करी बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड,
तो यहाँ कह जाए कौन FII तो FII क्या कह जाए ताकू मु प्रॉपर वीडियो करी जो फाइनेंशियल टर्म्स को लेकिन गोटे वीडियो करछि तो निश्चित जो मैंने देखी ना देखने हे जाए आपनकर बहुत किसी डाउट्स क्लियर हो जिवो नेक्स्ट welfare aspect becomes important in case where welfare aspect becomes important in case where rise of national income takes place no fall of national income takes place no national income remains constant no redistribution of national income takes place the correct answer will be option number D next repo rate is the rate at which repo rate is the rate at which the RBI lends to the state government no the international aid agency lend to RBI the RBI lends to banks the banks lend to RBI तार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी ठीक अच्छे बहुत इजी क्वेश्चन थिला who stated that welfare increase if at least one person is made better off with no change in the position of others तो एटा किए कहिथिले ए पिगाओ पेरेटो SR Hicks काल्डोर तार करेक्ट आंसर कौन हम पेरेटो किए कहिथिले पेरेटो नेक्स्ट इन इंडिया द बैंक NABARD does not provide refinance to कहा को दिए नहीं refinance to scheduled commercial banks regional rural banks export import banks state land development banks तो यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन नंबर सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए नेक्स्ट सोशल वेलफेयर फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला बर्गसन के एरो जेम टोबिन पॉल सैमुएल्सन तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए बर्गसन आंकर पूरा ना होची अब्राहम बर्गसन ओपन मार्केट ऑपरेशंस of a central bank are sale and purchase of foreign currencies corporate securities trade bills government securities तार करेक्ट आंसर कौन हम तार करेक्ट आंसर हम गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज क्लियर नेक्स्ट which index is used by RBI to decide repo rate and measure inflation CPI rural CPI combined IIP WPI तो यार करेक्ट आंसर कौन हम यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी WPI रो फुल फॉर्म कौन होलसेल प्राइस इंडेक्स CPI रो फुल फॉर्म कौन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्लियर नेक्स्ट The place where bankers meet and settle their mutual claims and accounts is known as the place where bankers meet and settle their mutual claims and accounts is known as treasury clearing house collection center dumping ground there correct answer of option number B clearing house most important question next the term Hindu rate of growth was conceptualized by कहा द्वारा conceptualized हेतिला Hindu rate of growth VK RB Rao राज कृष्णा जे भगवती मोइस्ट सोशलिज्म तार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर बी राज कृष्णा नेक्स्ट इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर बाय द सेंट्रल बैंक व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज हम इंक्रीज हम नो चेंज नॉन ऑफ द अबव तो कौन हम करेक्ट आंसर तो ओबियसली इंक्रीज हम तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखो ये वीडियो पीडीएफ जदि आपको दरकार हुए देन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मो टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छी लिंक थ्रू रे जाइए मो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करने एवं पीडीएफ टी को आराम से डाउनलोड करेंगे इक्वालिटी इन रूरल एरियाज कैन बी ब्रॉट बाय इक्वालिटी इन रूरल एरियाज कैन बी ब्रॉट बाय फिक्सिंग सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स फिक्सिंग प्रोक्यूरमेंट प्राइस रेशनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लैंड रिफॉर्म्स तार करेक्ट आंसर हम लैंड रिफॉर्म्स ठीक अच्छे लैंड रिफॉर्म इक्वालिटी इन रूरल एरियाज कैन बी ब्रॉट बाय लैंड रिफॉर्म्स द मेन फंक्शन ऑफ द एक्जिम बैंक इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जोटा कह जाए EXIM एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक द मेन फंक्शन यार कौन to help RBI in the regulation of foreign exchange, to prevent unlicensed transactions, to promote exports and curtail imports. The correct answer will be option number C. Next. Who acts as banker to the Indian government? International Monetary Fund, Reserve Bank of India, World Bank, State Bank of India. तो omit करके ऑप्शन जानी परिवे यार correct answer कौन होगा Reserve Bank of India. Next. Which bank gives long term loans of एजारे ऑफ होगा नहीं to farmers होगा
Which bank gives long term loans to farmers? Obviously गोटे ही अच्छी सेला NABARD ठीक अच्छे NABARD अच्छा NABARD रो फॉर्मेशन केबे हेतला जानिछन जदी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकी जणेबे नेक्स्ट को ईयर फॉर्मेशन हेतला NABARD फाउंडेशन हेतला Which is or are characteristics of poverty याद्रु कोटा characteristic of poverty Most of them are living in rural areas, low income, low quality of human resources, all of the above. So obviously, your correct answer is option number D, all of the above. The standard of living in a country is represented by its बहुत इजी क्वेश्चन है national income, per capita income, poverty ratio, unemployment rate. तो यार correct answer है option number B, per capita income. Next. Rate of growth of population is high in underdeveloped countries due to rate of growth of population is high in underdeveloped countries due to high birth rate, low death rate, both A and B. The correct answer will be option number C, both A and B. Clear? Next. Which is the best measure of economic growth of a country? GNP, GDP, net revenue, none of the above. The correct answer will be option number A, GNP. तो GNP रो फुल फॉर्म आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकी जणातु GNP GDP होची ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GNP सेमती कोन नेक्स्ट सेक्टर्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर आर जोटा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर आसुची से सेक्टर कोन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एनर्जी ऑल ऑफ द अबव तार करेक्ट आंसर हबो ऑल ऑफ द अबव ठीक अछि तो इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर रे ट्रांसपोर्ट आसुची कम्युनिकेशन आसुची एनर्जी आसुची तो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर ऑलरेडी हमें डिस्कशन करिचे Which of the following is not true about vote on account या भीतर कोटा ट्रू नुह रिगार्डिंग vote on account देखिबा ऑप्शन गुडी को It is a budget presented in the parliament to cover the deficit left by the last budget वन टा ही भूल अछि तो करेक्ट आंसर हो यार ऑप्शन नंबर ए तो सही हिसाब रे बाकी तीनटा ऑप्शन ठीक अछि इट डज नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू सेट फॉर द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द न्यू प्लान व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1st April ठीक अछि इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम imposing fresh taxes or withdrawing old one ठीक अछि दिस allows the government to withdraw an amount for a period with the consent of parliament ठीक अछि तो करेक्ट आंसर हो यार ऑप्शन नंबर ए The theory of drain of wealth from India to Britain was developed by कहा द्वारा डेवलप करा जातला ई theory तो यार करेक्ट आंसर हो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दादा भाई नारोजी नेक्स्ट Which one of the following statement is correct? The Fiscal Responsibility and Budget Management Act FRBMA Fiscal Responsibility and Budget Management Act concerns तो ये ऑप्शन भीतर कोडा हबो fiscal deficit, revenue deficit, both fiscal and revenue deficit, neither fiscal deficit nor revenue deficit. तो करेक्ट आंसर हबो यार कोन ऑप्शन नंबर ए fiscal deficit. Clear? Next. Industrial revolution transferred power to landlords, monarchy, technocrats, merchant class. तो करेक्ट आंसर हबो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ट्रांसफर पावर टू मर्चेंट क्लास ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स मेड एन attempt to estimate the per capita income of India who among the following Indian freedom fighters made an attempt to estimate the per capita income of India Gopal Krishna Gokhale Firoz Shah Mehta Surendra Nath Banerjee Dadabhai Naroji तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दादाभाई नारोजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली अर्बन एग्रेरियन इंडस्ट्रियल नॉन ऑफ द अबव तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एग्रेरियन होची जोटा एग्रीकल्चर कहि परिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी Which among the following formulates fiscal policy? RBI, Finance Ministry, SEBI, Planning Commission. The correct answer is Finance Ministry. Next. Which department is the nodal department for overseeing the public financial management system in the central government of India? Most important question कहि परिबा आजिरो वीडियो रो Which department is the nodal department for overseeing the public financial management system in the central government of India? The correct answer will be option number A, Department of Expenditure. Next, what is recession? Recession काहा कुआ जाय तो ऑप्शन गुडी को देखियो ऑप्शन भितर कोटा ठीक अछि rise is the cost of production एटा rise इज हबनी एटा rise इन हबो
rise in the cost of production, especially because of wage increase in money supply without a matching increase in production. Na dita bhul hochi. Reduction in production and employment for want of sufficient demand for goods. Employment reduction. One second. Increase in money supply without a matching increase in production. Reduction in production and employment for want of sufficient demand for goods. तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी. देखिबा करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी. ठीक अछि. Marxian theory of evolution of economy is referred to. Marxian theory of evolution of economy is referred to. Induction, deduction, dialectica, materialism, none of these. The correct answer about dialectica, materialism. Next, which committee was constituted for reform in tax structure? Which committee was constituted for reforms in tax structure? Narsimham Tax Committee, Cheliha Committee, Gadgil Committee, Kelkar Committee. The correct answer will be option number B, Cheliha Committee. ठीक अछि. Next, which of the following monetary policy tools is used by RBI to control inflation? यादर को monetary policy को as a tool use करा जाउची by RBI कौन पई to control inflation. Fiscal drag, parsimoniousness measures, repo rate, fiscal boost. The correct answer habo yar kono option number C, repo rate. Next, the area under the special export zones SEZs has been declared foreign territory. This means that the area under the special export zones has been declared foreign territory. This means that कौन था अर्थ तो ऑप्शन हिसाब रे देखिबा goods cannot एजारे cannot spelling भूल अछि the good cannot goods cannot be brought into the domestic tariff area ना होबनी. Such goods cannot be sold in the domestic tariff area ना होबनी. Goods brought from the SEZ to the domestic tariff area are to be treated as imported goods. The correct answer will be option number C. Correct answer होची option. ठीक अछि. Correct answer हबो option number C. Goods brought from the SEZ to the domestic tariff area are to be treated as imported goods. Next, Industrial Revolution took place in France, Germany, Britain, America. The correct answer will be option number C, Britain. Next, which of the following sectors does not come under tertiary sector? यादर कोडा tertiary sector under रे आसे नहीं. Transport, trade, business, services, electricity. The correct answer will be option number D, electricity. Next, ताले electricity को sector under रे आसे primary, secondary. तो comment करिकी comment box रे जणांतु. Next, for the take-off stage to take place, minimum rate of investment needed is केते? For the take-off stage to take place, minimum rate of investment needed is केते? 10%. ठीक अछि 10%. Next, the headquarters of International Monetary Fund and World Bank are located at. International Monetary Fund and World Bank are located at कोठी अछि तार करेक्ट आंसर हो Washington DC, America, USA. Washington DC, USA. Clear? Next, in which stage self-sustained growth takes place? In which stage self-sustained growth takes place? Take-off stage, drive to maturity, traditional society, high mass consumption stage. The correct answer will be option number B, drive to maturity. Next, which tax is collected by panchayat? Most important question, which tax is collected by panchayat? Sales tax, custom duty, land revenue, tax on local fares. The correct answer will be option number D, tax on local fares. Next, mixed economy has the character of capitalism, socialism, feudalism, both A and B. The mixed economy का को आजे both A and B, capitalism and socialism को. Clear? Next, Brent index is associated with crude oil prices, copper future prices, gold future prices, shipping rate index. The Brent index is associated with crude oil prices. Next, if RBI increases repo rate, then what may be its impact on Indian economy?
inflation will reduce, inflation will increase, reserve repo rate will decrease, credit will be cheaper. The correct answer of यार option number A, inflation will reduce. If RBI increases repo rate, then inflation will reduce. Clear? ठीक अच्छे तो ये 50 क्वेश्चन आम कवर कले आउ 50 क्वेश्चन तो वीडियो केमती लगला कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित जनइबे जदि आपको ठीक लगे देन आउ वीडियो नहीं कि आसबि या रिलेटेड यही टॉपिक रिलेटेड आ कौन इम्प्रूवमेंट कले आपको भल लगे आप कमेंट करेंगे मुझे तार रिप्लाई निश्चित देवी और जो मैंने भी प्रथम शेष जाए देखी से मो तरफ धन्यवाद।